क्या है? Namaskaram, a very warm morning to one and all. I am Akriti, a student of Jammu Sanskriti School, Kathua. Today, our school has organized a cyclothon to raise awareness among the youth of Kathua that small change in our day-to-day routine can definitely bring a positive impact on our environment. We all are aware that the degree of hotness has reached to its extreme, and one of the reasons behind is definitely the climate change and deforestation. On this very day, we all the Sanskritians with pride have taken this initiative to ride the bicycle in different regions of our area and to plant as much as tree as we can to make people realize that small acts can definitely lead to a big change. At last, I would say that पर्यावरण को दूषित नहीं सुरक्षित बनाना is our sole purpose. धन्यवाद. Welcome to the cyclothon event organized by Jammu. छोड़ दो. ओके सर. Green revolution, avoid deforestation, planting more and more trees and better climate change. सर बताएंगे जो साइक्लोथॉन की सबसे पहले तो मैं जम्मू संस्कृत स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस तरह का जो इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने. सीधी सी बात है, सब जानते हैं कि हेल्दी अगर एनवायरनमेंट रहेगा तो हम भी हेल्दी रहेंगे. और इसमें एक तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो जाएगी, इसके साथ साथ फ्यूल कंजम्पशन का उसके ऊपर असर पड़ता है. फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट पे, अगर एनवायरनमेंट हेल्दी है, प्लेनेट पर जितने हैं एनिमल्स हैं या जो भी इंसान हैं सब हेल्दी रहेंगे. जब हम सब हेल्दी रहेंगे तो हमारी सोच भी हेल्दी रहेगी. थैंक यू. है. इस साइक्लोथॉन और हमारे उद्देश्य की सफलता में योगदान दिया है. Our guest, our special guest, Mr. Rakesh Sumriya, eminent citizen. Now, Pranjal. Khajuria, Arshia, Samanyu, Chaitanya, Aranveer Singh Sumriya,
एक मिनट सर. जीरो सिक्स के ले लो फिर. Namaskar. As the head girl of Jammu Sanskriti School Kathua, I, Divyanshi Bakshi, stand before you all today with a purpose of urgency. Today we performed cyclothon on the eve of Environmental Day, and the students of Jammu Sanskriti School Kathua gathered on the eve of Environmental Week not just as the participants of cyclothon but also as the warriors to the battle to save our planet. Look around you. The world is crying for help. Our oceans are rising, our forests are burning, our ice caps are melting, our air is choking us. And in this polluted environment, cyclothon is a ray of hope. Cyclothon is not just a race, it is a rebellion against pollution and waste. And the students of Jammu Sanskriti School Kathua, we, the youth, are standing here as the generation that refuses to inherit a broken world. We gathered here today on the eve of cyclothon because we celebrated Environmental Week from the past 7 days in the school, performing various economic activities related to the environment. And we are feeling the need that why environmental is so important to us. Environment, from every car we leave behind, every stroke pedal we push of the cycles, we inherit a breath of fresh air. And do you know that WHO says that air pollution alone claims 7 million deaths each year? And this air pollution, what causes air pollution? Our vehicles, our air conditioners, our refrigerators which release fluorocarbons in the environment. So all the people who are listening to me right now, all I expect is one cycle journey each week. Please अपनी गाड़ियों को, अपनी स्कूटीज़ को साइड रखकर एक बार साइकिल को यूज़ करें वीक में एक बार. क्या बता आपको पता है कि 10 किलोमीटर साइकिल चलाने से आपकी बॉडी के 1500 कार्बन फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं और इस CO2 में कितना हेल्प करेंगे आने वाली जनरेशन को. सो दिस साइक्लोथॉन वाज अ बेकन ऑफ होप, ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी एंड वी एक्सपेक्ट यू ऑल टू स्टैंड विद अस इन दिस जर्नी. जय हिंद. मेरा नाम धनंजय विशिष्ट है. मैं जम्मू संस्कृति स्कूल का छात्र हूँ. आज हमारे स्कूल ने एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया था. हम इस साइक्लोथॉन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम कारों की जगह साइकिलों का इस्तेमाल करें तो हमारा जो पर्यावरण होगा वो बड़ा स्वच्छ रहेगा और हमेशा साफ रहेगा. धन्यवाद. Good morning, I am Tanuj Sharma, the head boy of Jammu Sanskriti School Kathua. Today our school has organized a cyclothon. It's not just about cycling, it's about bringing a community together for a common cause. The environment is where we all meet, where we all have a mutual interest. By participating in this cyclothon, we show that we care about our planet and are committed in making a difference. Thank you. Good morning. My name is Aarti Sharma from Jammu Sanskriti School. I hope that the cyclothon which we did today will inspire others tomorrow for environmental conservation. As the saying goes, the journey of 1,000 miles starts with a single step, and today we all together have taken that step together. So, last not the least, I would like to say, जितना हो सके पर्यावरण को बचाएं. Thank you. And this is Pranjal Jastodia, student of Jammu Sanskriti School Kathua. So today our school has taken a remarkable initiative by organizing a cyclothon to raise awareness. So this cyclothon is not just a ride, but it's all about spreading awareness as our environment is degrading day by day and the pollution is increasing day by day. So to ensure not to continue all this pollution and hazards in the environment, we have started a cyclothon appeal. So I'll say to that you all should do the cyclothon and make sure our environment is clean. Thank you. Be the part of the solution, not the pollution. Good morning to all the dignitaries present here. Today's morning sparks a spirit of nature conservation and physical engagement within all of us. Today we are hosting our beloved cyclothon community event in our region, Kathua. Today's event inspires everybody to go green, go engineless and plant as many trees as possible so that this
is not just a revolt but a revolution. You have to go green in order to save our melting glaciers, our dying animals, and also our beloved people. सिंह मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ जम्मू संस्कृति स्कूल कठुआ। सो आज का जो साइक्लोथॉन था, इससे हम अपनी सिटीज़ को क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि हमें साइकिलिंग को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स, क्योंकि इससे क्या होगा कि साइकिलिंग करने से हमारी हार्ट डिजीज़ जो है उससे हम बच सकते हैं। इसके साथ ये मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, ये हमारी कैलोरीज़ को बर्न करता है, जिससे हम फैट रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आजकल की यूथ में ये है कि वो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर उनको एटलीस्ट 100 से 200 मीटर या साथ में भी जाना हो, आसपास में भी जाना हो, तो इसको थोड़ा शेम फील करते हैं। तो इस चीज़ को हमें शेम फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमें। और साथ में 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर, इनसे हमारे एयर पॉल्यूशंस हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशंस हो रहा है, जैसे ट्रैफिक जाम्स। और अगर यहाँ का भी एग्जांपल लेके देखो तो यहाँ पे 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है उनसे। लेकिन साइकिल से हम ट्रैफिक से भी बच सकते हैं। इस मैसेज के साथ साथ हमने एक मैसेज और कन्वे किया कि हमें, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो प्लांटेशंस करनी चाहिए ताकि। Good morning. I'm Mrs. Miliar Sumbria, Principal, Jammu Sanskriti School, Kathua. On behalf of the entire family of Jammu Sanskriti School, Kathua, I would like to wish everybody a happy Environment Day, which was on the 5th of June. Creating an awareness regarding the environment was our endeavor today. To organize this cyclothon was a reason that we all, the entire Sanskritian family, is on a mission. We are on a mission that we have to save life. We are on a mission that this is one earth and we have one life. So let's all of us come together to save our earth. Let's make this generation future ready, to be physically fit, to be mentally fit, so as to undertake this endeavor to safeguard their environment, which is the need of the hour before it gets too late. Also, on behalf of the entire Jammu Sanskriti School Kathua family, I would like to thank District Administration for having helped us in organizing this event today. Police officials, the traffic police, each and everybody who has supported us today in our endeavor, I am my heartfelt gratitude to them. Thank you so much. Jai Hind.